Morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, welcome once again in your GK class. So, children, let us discuss one more page. That is page number 32, and it is related to national flags. Okay. So, children, you have to identify the flags of different countries given below, and children, the clues given here will definitely lead you to the correct answer. Okay. So, children, I have already written the names of the countries, but you people will first understand and then write down the answer. Okay, so first one is given over here. What's the clue? The flag belongs to the country which is the techno giant of the world. Techno giant means बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा पायनियर है, बहुत ही आगे है. Got it? So the answer is Japan. Okay, so first one is Japan. So this flag belongs to Japan. And also keep this in your mind that Japan is techno giant of the world. Then second one is बच्चे, the flag belongs to the country that is known as the land of white elephants. So white elephants कहाँ पर मिलते हैं बच्चे? थाईलैंड में. So this flag belongs to Thailand, the land of white elephants. Then there comes बच्चे third one. The flag belongs to the country that is known as the land of thousand lakes. So which country is the land of thousand lakes? So it's Finland. So children, this flag belongs to Finland. Flag having plus cross of blue color. Then fourth one is बच्चे, this flag belongs to the nation that loves the game of saucer. तो saucer game कहाँ खेली जाती है बेटे? बहुत ज़्यादा ब्राज़ील में. ओके, what this saucer games means बच्चे? saucer means फुटबॉल. ओके, फुटबॉल तो सभी को ही मालूम है. ओके, तो ब्राज़ील में फुटबॉल जो है बहुत ज़्यादा ही फेमस है. ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड फुटबॉल इज़ ऑल्सो द मोस्ट लवेबल गेम और मोस्ट फेमस गेम. ओके, क्रिकेट भी उसके बाद आता है फर्स्ट नंबर पे. There comes football. Okay, so this flag belongs to Brazil. Then next one बच्चे, the flag belongs to the nation that is famous as land of golden fleece. Golden fleece means वहाँ पे बच्चे वूल बहुत ज़्यादा मिलती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल मिलती है. बहुत ज़्यादा शीप्स को वहाँ पे टेम किया जाता है. ओके, so this flag belongs to Australia. Okay, and also Australia is known as land of golden fleece. Then sixth one बच्चे, this flag belongs to the country which is known as land of maple. maple एक लीफ होता है. ओके, so Canada is the land of maple बच्चे, and this flag also belongs to Canada, the land of maple. Then children, next one is this flag belongs to the country that is known as gift of Nile. So Nile जो है longest river of the world, वो कहाँ पे originate होती है और कहाँ पे flow करती है? mostly Egypt में. ओके, so this flag belongs to Egypt, known as the gift of Nile. Okay, there comes next. The flag belongs to the country that is known as the cockpit of Europe. So what is cockpit? Cockpit is the part of the plane where pilot sits and control the एरोप्लेन. ओके, तो ये कॉकपिट वो वाला पार्ट रहता है आगे का प्लेन का जहाँ पे पायलट बैठ के प्लेन को कंट्रोल करता है. ओके, या उड़ाता है उसे. सो बच्चे, दिस फ्लैग बिलोंग्स टू बेल्जियम एंड बेल्जियम इज ऑल्सो नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप. ओके, देन देयर कम्स लास्ट, दैट इज द फ्लैग बिलोंग्स टू द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सभी जानते हैं सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सी है बेटे वर्ल्ड की? चाइना. सो दिस फ्लैग बिलोंग्स टू चाइना and China is also known as the populous country of the world. Okay, so that's all in this page बच्चे. So children, let us discuss page number 33 and it is related to continental quiz. Okay, so you have to identify the continent to which the given countries and cities belong to. Here the names of countries and cities are given and you have to identify the name of the continent where these countries and cities lie. Okay, first one is बच्चे countries India, Malaysia, Nepal, Bhutan, and cities Jodhpur, Kuala Lumpur, Pokhara and Thimphu. So all these countries and cities belong to बच्चे Asia. So first one is Asia.
and then second set of countries: Belgium, France, Greece, Germany, and cities: Brussels, Marseille, Athens, and Frankfurt. So all these countries and cities lie in Europe. Okay, these countries belong to Europe continent. Okay, second one is Europe. Then third set of countries and cities: Egypt, Kenya, Ghana, Nigeria, and Giza, Nairobi, Accra, and Lagos. Okay, all these countries and cities belong to continent Africa. Okay, Africa, the darkest continent. Okay, then there comes next set of countries: Canada, Mexico, USA, Cuba, and cities: Toronto, Puebla, New York, Havana. All these cities belong to continent नॉर्थ अमेरिका. ओके, जो आपका यूएसए है वो भी कहाँ पर लाया करता है बच्चे? नॉर्थ अमेरिका में. ओके, देन देयर कम्स नेक्स्ट सेट ऑफ कंट्रीज: Chile, Argentina, Brazil, and Bolivia. Okay, and the cities: Santiago, La Plata, Brasilia, and Sucre. So all these countries and cities belong to the continent South America. Okay, so children, what's given in, do you know? Antarctica contains no countries or permanent residents. Australia is the only country on the Australian continent. Okay, तो जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है बच्चे, उसमें कोई कंट्री नहीं है और कोई रेजिडेंट भी नहीं है परमानेंट वहाँ पे, क्योंकि ये टोटली स्नो कवर्ड है और यहाँ पे जस्ट एस्किमोज रहते हैं. यहाँ पे कोई भी परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं रहते. ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी कंट्री है. ऑस्ट्रेलिया मेन कंट्री है बच्चे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की. वैसे तो और भी आते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ द मेन कंट्री on the Australian continent. Okay, so that's all in page number 33. So let us discuss with a page number 34, that is related to UNO. UNO means बच्चे United Nations Organization. It is an organization of countries who have come together to maintain international peace and security. United Nations functions through its 6 principal organs, and with the help of the clues given below, you have to name these organs. So first one is बच्चे, this is the main body of United Nations and consists of all its members. So the main functional body of United Nations is बच्चे General Assembly. General Assembly takes all the important decisions. Okay, it's the principal organ of United Nations बच्चे. Okay, and this is the logo of United Nations. Okay, then there comes बच्चे second one. The main responsibility of this organ of United Nations is to maintain international peace and security. So जो ये organ है बच्चे United Nation का, इसका main function है कि ये international level पे peace and security को maintain करता है. It maintains international peace and security. ये वाला जो organ होता है United Nation का, ये इसका काम ही है पूरे international level पे शांति बनाए रखना. Okay, so children, there are total 193 countries who are the members of United Nations, but out of these 193 countries, only 5 countries are permanent members of the Security Council. Okay, so children, from rest of the countries, only 10 member countries will make temporary members for 1 or 2 years. Okay, so Security Council is responsible to maintain international peace and security. Okay, then third one is बच्चे, this is the organ of the United Nations that works on economic, social, cultural and humanitarian problems. So बच्चे ये जो organ है economic and social council, ये all over the member countries की economic, social, culture और humanitarian problems से deal करता है. और various surveys भी होते रहते हैं different countries के regarding कौन सी country economically कितनी sound है, वहाँ पे standard of living किस type का है एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन किस टाइप का है. ओके, सो ये सारा का सारा काम कौन देखता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ओके, देन देयर कम्स नेक्स्ट बच्चे फोर्थ वन. दिस ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रिपेयर्स people for self-government or independence. It also supervises administration of the trust territories. So बच्चे, the answer is trusteeship council, and trusteeship council
इज़ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये लोगों को प्रिपेयर करता है बच्चे इंडिपेंडेंस के लिए, ओके, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और ये सुपरवाइज भी करता है एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रस्ट टेरिटरीज़ की, गॉट इट। कोई कंट्री अगर अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये उसे इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करता है या उन्हें मोटिवेट करता है ये अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज़ बच्चे, फिफ्थ वन इज़ the main function of this UN organ is the settlement of the international legal problems and disputes। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो डील करता है। जब दो कंट्रीज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम चलती है, कोई वॉर की सिचुएशन आ जाती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाती है या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, then who will solve these problems and disputes? So International Court of Justice organ of the United Nations deals with those problems, okay. Then last one is बच्चे, this organ looks into all administrative matters of United Nations and is headed by the Secretary General। ये जो ऑर्गन है बच्चे यूनाइटेड नेशन का, ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है कि हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड इसे कौन हेड करता है? सेक्रेटरी जनरल। In real terms बच्चे, the Secretary General is regarded as the main head of the United Nations, okay। So children, the answer is Secretariat। तो Secretariat होती है, वहाँ से सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, okay। So Secretariat looks into the administrative matters of United Nations, okay। So children, who is the Secretary General of United Nations at presently? So Antonio Guterres। Antonio Guterres presently headed United Nations, and he is the Secretary General, and he took the charge of Secretary General on January 2017, okay। So that's all in today's topic बच्चे। So children, do your homework according to given instructions, okay।